कंडक्टर है वो मूव करेगा, अदरवाइज भी हो सकता है। तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो 3 फेज अल्टरनेटर्स यूज़ करते हैं, यानी सिंक्रोनस जनरेटर्स। तो उसमें तो अरेंजमेंट यही होता है। ओके, सो दैट वाज द स्टीम। देन वी हैव स्टीम टर्बाइन। इसको आप देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू टर्न द स्टीम टर्बाइन यू हैव टू सप्लाई अ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। ये आप देख सकते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से इनलेट आ रहा है और बीच में आ रहा है, दोनों तरफ से फैलता है, और जैसे जैसे किनारे फैलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर की तरफ। टर्बाइन absorbs energy from the high efficiency fluid. If pressure and temperature drops towards the outlet, ठीक है, ये इस तरह से मूव करता है। ठीक है, इसका एक हिस्सा अगर हम उठाएं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें एरोफॉयल शेप है। एरोफॉयल शेप आप जानते हैं, जो हम यानी एरोप्लेन के विंग्स पे यूज़ करते हैं, और जो विंड पावर के जो विंग्स हैं उसके इसमें भी यूज़ करते हैं, जिससे कि कम प्रेशर से भी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमे। So this is how the turbines are actually arranged. If you can see it. और आप देख सकते हैं कि लगभग सेम अरेंजमेंट है, बट ये है कि सेंटर से दोनों ही एक्सट्रीम की तरफ राइट या लेफ्ट जाते हैं, तो इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, जिससे कि यानी जिससे कि एक तरफ ही ये मूवमेंट होता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डायरेक्शन में घूमता है वो टर्बाइन। दोनों एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड है, और यही शाफ्ट जो है वो जनरेटर के मेटल पार्ट यानी जो कॉइल पार्ट है उसमें कनेक्टेड है। हाई कैपेसिटी पावर प्लांट ऑफन यूज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टीम टर्बाइन्स। आगे बढ़ते हैं। हाई कैपेसिटी पावर प्लांट ऑफन यूज डिफरेंट स्टेजेस, सेम बात है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह से, यानी और ज़्यादा भी, एक से ज़्यादा मल्टीपल टर्बाइन्स भी हो सकते हैं, और उनकी शेप जो है वो अलग अलग डिफिनीशंस की, यानी अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं, आप दो तरह के टर्बाइन यूज होंगे। सच अ हाई प्रेशर टर्बाइन, ठीक है, ये एक हाई प्रेशर टर्बाइन है, इमीडिएट प्रेशर टर्बाइन है, आईपी टर्बाइन जिसे कहते हैं, और दूसरा एलपी टर्बाइन है, लो प्रेशर टर्बाइन। तो ये दो अलग अलग तरह के टर्बाइंस हैं। सो नाउ वी हैव मेट आवर ऑब्जेक्टिव, वी हैव प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जनरेटर। ये यू अंडरस्टैंड। सो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, 170 बार पास ये जो प्रेशर है, और टेम्परेचर है अराउंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इट्स अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड अ वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, पहले एक टर्बाइन से गए तो दूसरे टर्बाइन में गए। ओके, सो if you can bring the low pressure and the low temperature stream back to their original states, that is 0.1 bar and 40 degree centigrade, तो एक मूवमेंट विच वर द मच हायर प्रेशर एंड द टेम्परेचर, वी कैन रिपीट द प्रोसेस। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही दो डायरेक्शन में, यानी सेंटर से अपोजिट साइड में लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी वो चीज़, जिससे कि मूवमेंट होगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू रेज द प्रेशर। You can use compressor for this purpose. Use of a compressor, uh, but compressing steam is a highly energy intensive process, and such a power plant will not be efficient at all. यानी कंप्रेशन लो प्रेशर को हाई प्रेशर में किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, यानी वो सख्त तो लो प्रेशर पे करेगा, लेकिन जो आउटपुट देगा वो हाई प्रेशर पे देगा, इसीलिए इसका नाम कंप्रेसर है, लेकिन इसमें एफिशिएंसी की कमी हो जाएगी। So of course there is a trade-off. Either you compress it more, or you improve your efficiency. But when it is compressed, again it helps us in efficiency. ये compressor का काम है. The easy way is to convert the steam into liquid and boost the pressure. ठीक है.
बेहतर ये है कि उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके और फिर उसके प्रेशर को यूज़ किया जाए। फॉर दिस पर्पज वी विल इंट्रोड्यूस कंडेंसर हीट एक्सचेंजर। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ से नीचे, यानी ज़ाहिर बात है बीच में जब ये था तो ज़्यादा स्टीम था, और जैसे जैसे किनारे होता जाएगा और इसका प्रेशर कम होता जाएगा वो वाटर में तब्दील होता जाएगा। तो वाटर में तब्दील होगा तो फिर जो है वो कंडेंसर का फंक्शन यहाँ शुरू होता है। इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कंडेंसर। इन द कंडेंसर a stream of cold water flows through the tubes। ठीक है, देख सकते हैं। तो जाहिर बात है कोल्ड वाटर उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो भी गर्म हो जाएगा, और जो गैस आ रही है वो पानी में तब्दील हो जाएगी। Typically, multi-stage traffical pump is used. That way, pressure will revert to its original state. तो जो प्रेशर कम हुआ है, जाहिर सी बात है प्रेशर कम होना भी इम्पोर्टेंट है, अगर प्रेशर कम नहीं होगा तो फिर वो मूवमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो मूवमेंट होगा, लेकिन हमें चाहिए कि वो प्रेशर दोबारा से हमें मिले ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहे। तो उस प्रेशर को हाई रखने के लिए हमने पहले उसे वाटर में कन्वर्ट किया और फिर वाटर को हम दोबारा से हीट करके गैस में कन्वर्ट करके हैवी प्रेशर डालेंगे। द नेक्स्ट टास्क इज टू ब्रिंग द टेम्परेचर बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो लो प्रेशर से आया ये, अब ये ऊपर जो है हाई प्रेशर से फिर जाएगा ऊपर। फॉर दिस पर्पज हीट इज एडेड टू द एग्जिट ऑफ द पंप विद द हेल्प ऑफ अ बॉयलर। ठीक है, ये नीचे से ये कंडेंसर से आया और यहाँ से फिर यहाँ पे पंप के जरिए ये ऊपर से फिर से हाई प्रेशर के जरिए हीट एक्सचेंजर जो बॉयलर है उसमें जा रहा है, वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, अब हम बॉयलर में आ जाते हैं। ये फीड वाटर जो नीचे से आया लो प्रेशर पे, इसको बॉयलर में ले जाते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसमें एक जगह फायरिंग हो रही है। पुलवराइज्ड कोल इज देन बर्न्ड इनसाइड द बॉयलर। पुलवराइज्ड कोल आप जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली crush it into a powder form, and then we throw it into the boiler. Not boiler exactly, but actually where we have to burn it in order to create a heat, and that heat will of course would transfer into water. So that will boil the water, of course, and that is why the name of it as boiler. So आप देख सकते हैं the incoming water initially passes through an economizer section। ठीक है, ये ज़ाहिर बात है जलेगा तो उसमें से धुआं निकलेगा, गर्मी निकलेगी। इकोनोमाइज़र यानी उस हीट को पानी में ट्रांसमिट करेगा, हीट एक्सचेंज, एंड दैट विल हीट द होल थिंग। द फ्लो वाटर डाउन कमर नीचे आ रहा है, एंड देन थ्रू द वाटर वॉल वेयर इट ट्रांसफॉर्म्स into steam। The pure steam is separated as a steam drum। ठीक है, नाउ द वर्किंग फ्लूइड। सो ये जो है ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। वर्किंग फ्लूइड एक अलग चीज़ है, और जो स्टीम बॉयलर में पनप रही है हो रही है वो एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ का मतलब दे नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, बट दे आर ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ heat exchanger। Now the working fluid back to its original state। Original state का मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ये रेड वाला सेक्शन है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है, I hope you are able to differentiate between working fluid and the steam। तो इसमें से आउटपुट जो इसका ये है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से स्टीम का आना है, जिसे वर्किंग फ्लूइड भी कहा जा रहा है। And that of course goes to the turbine। यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is what we discussed at the very start। ये जो white वाला है ये नीचे से जो पानी है जो
यानी पानी, just after converting from steam to water, then this water goes back by this white pipe. The red one is heat. So heat means steam at high pressure and high temperature. So heat at high pressure and temperature, water at low pressure and low temperature comparatively. So this is how it is. And the cycle can be repeated over and over again for continuous power production. तो यही रैंकिन साइकिल है जो मैं शुरू में आपसे डिस्कस कर रहा था. Okay, this is what is known as Rankine cycle. एक बार रुकिएगा, just a minute please. So this cycle has to be repeated over and over again for continuous power production. So basically this is how this whole thing goes. But of course इसके डिटेल में जाएंगे तो हमें और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे जो यहाँ पे शायद नहीं है, और उसकी वजह ये होती है ताकि हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकें. आपको मालूम है जो टिपिकल एफिशिएंसी है वो लेस देन 30-40% है, यानी बिटवीन 30-40%. So it's not a good percentage of efficiency, and by the way, this is after utilizing all our best practices or state of the art technologies. अगर हम ये नहीं करेंगे जो आगे हम देखेंगे, introduction of superheaters and economizers and other equipments, हम देखेंगे कि अगर ये नहीं होते, सिंपली हम वाटर को बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट करके डायरेक्टली टरबाइन में डालते, और टरबाइन भी, यानी देयर आर नॉट बीन व्हाट वी कॉल इम्प्रूवमेंट्स इन द टरबाइन टेक्नोलॉजी एज वेल. तो अगर वो भी नहीं करते तो ये परसेंटेज 10% भी करीब आता. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड that even after applying best practices and state-of-the-art technologies, the percentage of the overall efficiency of what we give energy to it and what we take energy out of it is somewhere between 30 to 40%, which is not a good percentage, but of course we don't have much options. Now, if you just play it further, it is the mentioning of the pressure, but a power plant working on this basic Rankine cycle will have a very low efficiency and low capacity. यानी अगर सिंपली इसको ऐसे ही छोड़ दिया जैसा अभी स्टेट में दिख रहा है, सिंपली बॉयलर से सुपर हीटेड वाटर हीटेड प्रेशर पे आ रहा है, इसको कंडेंस कर रहे हैं और वापस भेज दे रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी लो होगी, कैपेसिटी भी लो होगी. तो इसको बढ़ाने के लिए अब आगे जो डिस्कशन होगा कि इसको एफिशिएंसी को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, दिस इज व्हाट द डिस्कशन इज नाउ अबाउट. तो ये देख सकते हैं 20 to 25% अभी ये एफिशिएंसी होती है, which is of course not a good efficiency. We can increase the performance of the power plant considerably with the help of few simple techniques. That simple techniques we will see now. First is superheating. Okay, यानी टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा दें, 350 से 500 या उससे भी ज़्यादा कर दें, रीहीटिंग कर दें, और फीड वाटर हीटिंग. यानी तीनों प्रोसेसेस में हम टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं. टेम्परेचर बढ़ाने से जो एफिशिएंसी है, टरबाइन एफिशिएंसी, वो बढ़ जाती है. दैट एक्चुअली improves the overall efficiency of the power plant as well. So now what he's doing, in case of superheating, even after a liquid has been converted into steam, even more heat is added. ठीक है, स्टीम बनने के बाद एक अलग से सुपर हीटर लगा के उसको हम फर्दर हीट कर रहे हैं. सो यू कैन नाउ सी देयर इज समथिंग अनदर स्ट्रक्चर जो कि वर्किंग फ्लूइड के बाद एक सुपर हीटर लगाया गया है,
and with that steam becomes superheated. So superheated meaning it's just a relative term where what we mean is that we want to improve the temperature even beyond 350 degrees centigrade, which was achieved by earlier methods. So we are just increasing that temperature, and then of course you can see it's a red. Okay, so now you can see this superheated steam has now gone up to 550 degrees centigrade. So you can see around 200%, not percent, 200 degrees centigrade additional energy has come into it. So the higher the temperature of the steam, the more efficient is the cycle. So you see that efficiency, temperature. Okay. So you can see by equations average temperature, hot reservoir, cold reservoir, and the difference between cold to hot. जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ज़्यादा efficiency होगी. So just remember the Carnot's theorem of maximum thermal efficiency possible. So इसमें इस प्रोसेस से efficiency gain जो है वो 5% का है. So अगर 20 से 25 में है तो आप समझ सकते हैं 25 से 30 एडिशन हो गया है. It's because of addition of superheaters. और ये कोल्ड से हॉट के बीच में डिफरेंस नेचुरली कोल्ड तो कोल्ड ही था. And what we have done is we have improved the efficiency, the temperature of hot cycle. तो जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, TC by TH की वैल्यू उतना ज़्यादा कम होगी, और जितना वैल्यू TC by TH की कम होगी उतना ही 1 minus that smaller value will become more, and that means efficiency will increase. So that's from the Carnot's theorem of maximum thermal efficiency. Now what we can do further is, but steam turbine material will not withstand temperature of more than 600 degrees Celsius. Now this is another issue. स्टीम टरबाइन जो है जिस मटेरियल का बना है उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है. यानी in any practical device or practical thing there are always limitations. So we have to of course improve our performance and efficiency within the constraints set by different parameters. One of the parameters being the material of the machine. So of course it got to have some efficiency. आप इसकी जगह स्टेनलेस स्टील से और कोई बेहतरीन प्लैटिनम निकल का कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दें, but then we got to have the issue of money as well. हम जानते हैं कि जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल है, but then we can't use gold because of the issue of money involvement into that gold. So so money of course is a factor. Finance is also a factor. So we can't go without any checks. So there are checks and balances in the nature and the systems, and that is why we got to have stick with the what we call trade-off between quality and cost. So we have to trade offs, and that is why we go for like copper, aluminum instead of gold or silver as a conductor. So same theory, same principle can be applied here. We got to have better materials, but then we have to look out for the cost effectiveness as well. So now what? But the steam turbine will not withstand temperature of more than 600. So superheating is limited to the threshold. Maximum bearable temperature is 600 degrees centigrade. So limit of superheating is 550 degrees centigrade. The temperature of the steam decreases as it flows along the row of the blade. जैसे मैंने कहा नीचे से ऊपर की तरफ सेंटर से एक्सट्रीम्स की तरफ राइट और लेफ्ट जैसे जाता है देखते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ा दी गई है जिससे कि उसका प्रेशर कम हो, टेम्परेचर भी कम हो.
और जो हमारा असल काम क्या था, हमारा जो काम था मोटर को यानी टरबाइन को चला देना, दैट वी ऑलरेडी अचीविंग इट। अब ये है कि जो भी उसमें हीट आया है उसको हम दोबारा से सर्किल पूरा करके इसको वापस पहुंचा दें। तो किस तरह से सबसे ज़्यादा मोस्ट इकोनॉमिक सर्किल होगा, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। The temperature of the steam decreases as it flows along the row of the blade that you can see. I think it is visible. Consequently, a great way to increase the efficiency of the power plant is to add more heat after the first turbine stage. ठीक है, यानी डायरेक्ट पाइप में ना करके फर्स्ट स्टेज के बाद और ज़्यादा हीटिंग करते हैं, तो रीहीटिंग की बात जो है। दिस इज नोन एज रीहीटिंग एंड इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम, अगेन लीडिंग टू हाई पावर आउटपुट एंड ग्रेटर एफिशिएंसी। इससे 3% बढ़ जाती है। तो ये एक रीहीटिंग भी की जा सकती है इससे। The low pressure size of the power plant are prone to stuck the atmospheric air. Sorry, suck the atmospheric air. So that is why it should not suck the atmospheric air. Atmospheric air को अगर वो suck करने लगा तो जाहिर सी बात है, the whole idea is to give the more heat। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की हीट कितनी है, बहुत ही कम होगी, 20, 30, 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम। सो दैट विल एक्चुअली डाइल्यूट द temperature inside। Okay, this is how the air is sucked in। ठीक है, ये बात हो रही है कि सोफिस्टिकेटेड सीलिंग अरेंजमेंट के बाद भी हम पाते हैं कि कुछ एयर ये एटमॉस्फेयर से ले लेता है, इज बिकॉज पी इज लोअर देन द पी एटमॉस्फेयर। यानी जब स्टीम टरबाइन को मूव करने के बाद जो पावर हो जाता है वो 0.1 बार तक पहुंच जाता है, और जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 है, तो यानी कम हो जाता है। तो जब वैक्यूम सा बनने लगेगा तो फिर वो एयर को सक करेगा। Okay, the dissolved gases in the feed water, sorry, the dissolved gases in the feed water, the dissolved gases in the feed water will spoil the boiler material over time। दूसरी बात है कि अगर एयर से सक करेगा तो ये एयर ऑफ द पावर प्लांट इज वेरी पोल्यूटेड, इज बिकॉज ऑफ द चिमनी और जो कोयले की जो बर्निंग है वहाँ पे। तो अगर उसको हम अंदर आने देंगे सो दैट विल एक्चुअली अफेक्ट द dissolved O2 CO2 will of course spoil the boiler material over a period of time। So these are the issues. To remove these dissolved gases, an open feed water heater is introduced। Open feed water heater। तो dissolved gases को करने के लिए, हटाने के लिए we have feed water। Hot steam from the turbine is mixed into the dissolved gases। Steam bubbles so generated with absorb the dissolved gases। तो उसको absorb करना है। Derated, the mixing also preheats the feed water which helps improve the efficiency of the power plant। तो इस पर derated यहाँ पे बात आई थी, फीड वाटर ये डिजोल्व हो रहा है इसमें, डीएरेटेड वाटर। तो बेसिकली ये जो गैसेस है जो सक कर रहा है टरबाइन कुछ अमाउंट तक, उसको हम जो गैसेस है उसके साथ उसको रिमूव करने किया जा रहा है उसमें। द मिक्सिंग ऑल्सो प्री हीट्स, और जाहिर सी बात है ये एक और काम कर रहा है कि पहले से ही हीट कर दे रहा है फीड वाटर को, which help improve the efficiency of the power plant to even greater extent। So instead of directly heating into the boiler with the superheater, we are preheating it before। और ये इम्प्रूव कर रहा है एफिशिएंसी को 4% के अराउंड।
All these techniques makes the modern power plant work under the high range of 40 to 45%. So I said 30 to 40%, but this is saying 40 to 45%. Uh, Anyway, let's agree with 40%. That's the common between what I just said and what is mentioned here in this, because in books mostly it is around 30 to 40%. So anyway, we can agree with the 40%, around 40%. Now we'll take to the look at the how heat addition, heat rejection are executed in an actual power plant. The cold liquid is supplied to the condenser with the help of a cooling tower. So that cooling tower is far away, and big concrete structures, and the heated up the heated up water from the condenser are red is sprayed in the cooling tower, which induces a natural air draft. ठीक है, ठंडा करता है उसको, एंड बाय स्प्रेड वाटर लूजेस हीट. नीचे जो है ऊपर गर्मी निकल जाती है उसकी, और नीचे वाटर आ जाता है. एट द हीट, what is this? And a heat inside the burning coal. So the condenser inlet. At a heat station inside the burning coal produces many pollutants. I think this heating process inside the burning coal induces many pollutants. This is what is कुछ English language गलत आ गया है. क्या कह रहा है? Okay, so what we are now actually discussing is that uh, removing the pollution or decreasing the pollution level by the help of this electro precipitators. So, so कूलिंग, ये मेरे ख्याल से क्लियर बात हो गई थी. उसके बाद ये है, अभी एक अलग चीज़ डिस्कशन हो रहा है कि किस तरह से जो बॉयलर में बर्निंग द कोल है, जिससे फ्लू गैसेस निकल रहे हैं, इससे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं नेचुरली, बिकॉज कोल converts into ash and then produces a lot of gas. That gas is as CO2, and I think we have already discussed that how CO2 is like 40 to 50% of total pollutants. Sorry, total carbon dioxide in air is because of the thermal power plant. So it's 40 to 45%. So it's a good percentage. So this burning coal produces many pollutants. So that pollutants has to be reduced, and they cannot directly allowed to go into the atmosphere, because that atmosphere is also producing oxygen for us. Them to stack the exhaust gas stream in the electrostatic precipitators. So it's a device where what we are doing is we are trapping more and more gases and trying to clean it as much as possible, and then whatever is left is transferred to chimney. We'll study about all these things. Electrostatic precipitators uses plates with high voltage static electricity. So it is also an electrical device, high voltage static electricity to absorb the pollutant particles. Okay, so these are the plates जिसके through ये जाएगा. Okay, so this was the whole, and of course it is going to the chimney at the end. So this is the whole idea about how the thermal power plant work. तो ये एक ओवरव्यू था जो हमने देख लिया.
and definitely we can have more videos and understand it in a more comprehensive way. Uh, Now, if you look to this diagram, I think that will make much more sense. This area is one area where we have alternator, step-up transformer, isolator, circuit breaker, isolator, bus bar. So this is what where we get actually electricity. But then we have a section called ash handling, where we have ash handling plant, ash storage, and then we have a coal handling plant where we have a coal storage, coal handling plant, and coal, and then there is a boiler, and then we have a superheater, and then we have economizer, then we have dust collector, or what we just discussed, ESP, and then a main valve where working water is going, then it is superheated steam is hit to the turbine, then it is coupled with the alternator and the electricity is produced, and then the turbine is having the exhaust. We have a condenser, then condenser is going to the cooling tower, then it is circulating water pump, then it is taking whatever water is there, then it is feed water heater, deaerators, meaning कुछ एब्जॉर्व कर लिया जो गैस पोल्यूटेंट्स, मेकअप वाटर, और फिर ये सब मिलके again it is going up with feed water, it is again going to the boiler, and then there is economizer से एक चीज़ निकल रही है एयर प्री हीटर, और यहाँ से ड्रॉफ्ट फैन और चिमनी एग्जॉस्ट. So this whole thing, I think now you are able to make better sense. ये पिक्चर और ज़्यादा क्लियर है. ठीक है, इसमें शायद yes, there is a river, of course, for water, and this is how the whole arrangement. This is schematic arrangement of modern coal-fired power plant. इसी चीज़ को हमने उसके ज़रिए समझा, एक सिमुलेटेड वीडियो के ज़रिए. So now we will discuss each section of it: fuel and ash circuit. Then we have air and fuel gas circuit, feed water steam circuit, cooling water circuit. ये लेआउट कुछ इस तरह का होता है, यानी कौन सी चीज़ कहाँ होती है. ओके, इसको यहाँ पे समझाया गया है. 27 यानी एलिमेंट्स हैं इसमें: कूलिंग टावर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, cooling water pump, transmission line, unit transformer. Get in? Okay. Low pressure turbine, boiler, feed pump, condenser. सब लगभग पढ़ा ही हमने. इसमें से चिमनी, एयर हीटर, फोर्स्ड ऑफन, pulverized gas, air impact heater. So these are things, and then we have schematic layout कह सकते हैं इसको, कि कहाँ पे क्या होता है, उसका एक अरेंजमेंट यहाँ पे. 300 मेगावाट थर्मल कोल फायर्ड पावर प्लांट. तो ये 22, 23, 27 यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है. 27 है लो वोल्टेज स्विच गियर. Okay, I think what we are seeing here is this is a power plant. What is 30? हाँ, ट्रांसफार्मर्स. तो ये एक ऊपर का जो सेक्शन है वो तो सेम है जो हमने यहाँ देखा, ये वाला, ये, और नीचे का जो सेक्शन है वो एक सबस्टेशन है जो लो पावर को हाई पावर में ट्रांसमिट कर रहा है. तो वी विल स्टडी अबाउट स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट्स. दैट इज वन पॉइंट. सुपर हीटर, रीहीटर, टर्बाइन, फीड वाटर हीटर, इवेपोरेटर, cooling tower, control room, switchyard, steam turbine. So anyway, we'll discuss about all these in the coming classes. आज के लिए मेरे ख्याल से this is sufficient. If you have any question, you can ask.